Hello everyone, welcome to PTE Reading and Writing Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is 21st video in this series, means हम already 20 reading and writing filling the blanks discuss कर चुके हैं which come in your real exam, and we have discussed the hacks how to crack PTE reading so that you can achieve your target score in first attempt, चाहे आपका target score 79 plus हो, 65 plus हो या 58 plus हो. So let's get started. As you know by now, my name is Bhrat Brij. I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE, and in this series हम discuss करते हैं reading tips को, strategies को, कैसे आपको RWFIBs, RFIBs attempt करने हैं so that you can achieve your target score also. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. And PTE reading इंटीग्रेटेड सेक्शन होता है, सो 32 to 41 मिनट्स होते हैं जो आपके पास रीडिंग मॉड्यूल के लिए आपके पास 32 to 41 मिनट्स होते हैं. 5 क्वेश्चन टाइप्स दिए होते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन टाइप इज रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर रीडिंग बिकॉज ये क्वेश्चन आपका रीडिंग में भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है और राइटिंग में भी मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है. एंड दिस इज द रियल पीटी रीडिंग स्कोरिंग की 90 ऑफ PTE रीडिंग सिर्फ रीडिंग मॉड्यूल से नहीं आते. रीडिंग मॉड्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 47 मार्क्स. आपके रीडिंग में मार्क्स स्पीकिंग से भी आते हैं, राइटिंग से भी आते हैं एंड लिसनिंग से भी आते हैं. नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक विच इज रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, वो 22 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है आपके रीडिंग स्कोर में भी एज वेल एज राइटिंग स्कोर में भी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that you pay attention to this question type, reading and writing filling the blank. And on the basis of our big data analysis, artificial data analysis, we have found out कि आप maximum time कितना spend कर सकते हो अपनी reading and writing filling the blank को crack करने के लिए. The maximum time you can spend is 3 minutes. And इसमें एक mistake, number one mistake जो students करते हैं कि they try to read all the words, they try to understand the meanings of the all words. क्या ये सही strategy है? The answer is no. You have to do the skimming. And those students who take coaching from us online or offline and we teach them skimming, कैसे आपको within 3 minutes में reading and writing filling the blanks solve करने हैं. So this is today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds ताकि आप इसको skim कर सकें. Then we are going to discuss it. Okay, so you know that सबसे पहले हम skim करेंगे to understand the tense कि क्या tense है, to understand the tone किस tone में बात कर रहे हैं, tone आपकी positive है, negative है या neutral है, और उसके साथ ही we are going to see कि आपका gist mainly ये reading and writing filling the blank किस चीज पे based है. So we are going to see that. So let's get started. The How I Feel About My School questionnaire designed by experts at the University of Exeter Medical School. अब अगर आपने हमारे ग्रामर के लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं, उसमें ब्रिटिश इंग्लिश रूल्स लर्नड हैं, सो यू नो दैट कि दिस इज अ टाइटल, क्योंकि अगर आपका अपर केस चल रहे हैं, फर्स्ट फ्यू वर्ड्स जैसे यहाँ पे स्कूल, अबाउट, फील, आई, हाउ, आपको पता है दिस इज टाइटल. एंड सेम वे में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेलर मेडिकल स्कूल भी इज नेम और प्रॉपर नाउन या फिर टाइटल. ओके, then what is questionnaire? Questionnaire is like set of questions which are designed, right? जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है designed by experts. Okay, so set of questions जो आपसे पूछते हैं to know your opinion, to frame the opinion, to download for free. It's something emoticon style faces. Emoticon जो आपको पता है स्माइलीज होती हैं, बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते होंगे व्हाट्सएप पे, चैट्स में, फेसबुक चैट में. So those smileys or faces are known as emoticons. Style faces with options of happy, okay or sad. It asks children to rate how they feel in 7 situations.
it is something to help teachers and others to something with young children on complex emotions because emoticons display emotions. यहाँ पे happy, sad क्या है? These are your emotions. Okay, and the project was supported by something professor at the university of that, something the design involving children to give feedback on which style of questionnaire they could relate to best. She said when we are something in research, it can be really hard to access how young children are feeling. We couldn't find anything that we provide what we needed, so we decided to create something. Okay. सो मोर और लेस किसी क्वेश्चनियर के बारे में बात हो रही है एंड टेंस जनरली हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा है. टोन इज ऑल्सो पॉजिटिव और न्यूट्रल बिकॉज जो वो क्वेश्चनियर उनको नहीं मिला दैट्स व्हाई दे डिजाइंड द क्वेश्चनियर. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट ब्लैंक. The how I feel about my school questionnaire designed by experts is asked, wants, available, wished to download for free. सो अब इस लगा हुआ है. इसके साथ आपको पता है अगर आपने हमारे ग्रामर कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं या तो आपका पैसिव वॉइस होगा. अगर पैसिव वॉइस है तो ईडीज लगे होंगे, नहीं तो आपका प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा होगा. इज दिस अ पैसिव वॉइस? आपको पता है इंट्रोडक्टरी लाइन में जनरली पैसिव वॉइस नहीं होती है. इट्स गोइंग टू बी एक्टिव. Okay, so that's why grammar, knowing the grammar tips and tricks is very important. वैसे भी अगर आप process of elimination, which I say is best friend forever, यूज करो. व्हाट इज प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन? जिसमें हम नेगेटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं. सिर्फ एक ऑप्शन या दो ऑप्शन बचते हैं जो जनरली हमारे सही होते हैं. लेट्स यूज नाउ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑल्सो टू फाइंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इज आस्क्ड टू डाउनलोड. ओके, क्या वो पूछ रहे हैं डाउनलोड करने के लिए फ्री में? द आंसर इज नो. अब वांट्स टू डाउनलोड. अब एक वांट्स एस प्रेजेंट टेंस है, यस राइट, बट क्या यहाँ पे एक क्वेश्चनियर की बात हो रही है? राइट, इज वांट्स टू डाउनलोड. वैसे भी ही इज के साथ हम जनरली इज के साथ एस या ई एस नहीं लगाते. ही इज गोइंग, ही इज ऑसम, ही वांट इट, he is wanting for that, something like this. Wants नहीं use होता. So that's why we are going to eliminate this. Now is available, yes, this makes sense. Is available क्योंकि available है डाउनलोड करने के लिए. और is wished to download. क्या हमने जब यहाँ पे कहीं पढ़ा, क्या हमने देखा है कि वो पेड था जो वो विश कर रहे हैं कि फ्री हो? The answer is no. So using process of elimination also, only one option is left which is available. So we will put this word which is available to download for free. It something इमोटिकॉन स्टाइल फेसेस. अब यूज की वर्ब की फॉर्म्स हैं राइट. यहाँ पे अगेन आपकी ग्रामर की नॉलेज टेस्ट होगी बिकॉज एक ही वर्ड दिया हुआ है, बेस फॉर्म है उसकी यूज. अब इट डज समथिंग हम ऐसे यूज करते हैं तो इट यूजिंग समथिंग हो सकता है. इट इज ब्यूटिफुल हम ऐसे कहते हैं. इट इज डूइंग, इट इज ऑसम. और इट यूजिंग वैसे भी आपको अगर कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर रहे हो तो एक ऑक्सिलरी वर्ब लगनी चाहिए थी. इज आर नहीं है, सो दैट्स वाई यहाँ पे यूजिंग नहीं हो सकता. इट यूज, यस इट मे बी इट यूज इमोटिकॉन स्टाइल फेसेस राइट, और इट यूज्ड राइट. रिमेंबर द टेंस, टेंस हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है. सो इट यूज्ड इमोटिकॉन स्टाइल फेसेस विद ऑप्शंस ऑफ हैप्पी. The answer is we are going to see बहुत सारे स्टूडेंट यूज, यूज्ड और यूजेस में कंफ्यूज होंगे. यूज कब होता है? जब प्लूरल की बात हो रही हो. और इट क्या है? एक तरह से आपका सिंगुलर प्रोनाउन है राइट. सिंगुलर हम जनरली रेफर करते हैं इट के साथ. दिस इज अ प्रोनाउन. एंड सेकेंड थिंग, अगर आप फॉरवर्ड रीडिंग भी करो तब भी उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है. एंड फॉरवर्ड रीडिंग इज वन ऑफ आवर स्ट्रैटेजीज विच वी टीच टू आवर स्टूडेंट्स फॉर क्रैकिंग योर रीडिंग एंड राइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स. सो यहाँ पे इट आस्क्स है. इसी रीजन से यहाँ पे भी क्या होगा? इट यूजेस पैरेललिज्म, अगेन एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ग्रामर. So using parallelism we know that यहाँ पे हमारा right answer क्या होगा? uses. ना use हो सकता है because वैसे भी वो plural form को represent नहीं कर रहा, तो इसीलिए आप use नहीं कर सकते हो. uses इसलिए होगा, एक तो वो singular form है, second आप अगर parallelism देखोगे तो it asks है यहाँ पे, it's not it ask. Okay, so I hope this is clear to you. And now next move on to the next blank. अब यहाँ पे verb की form change हो रही है. पहले वाले it के साथ थे आपके and now it is. Okay, now remember इसके साथ या तो आप ing form use करते हो या
पैसिव फॉर्म यूज करते हो। अब यहाँ पे सारे ही ईडीज हैं, मतलब पैसिव फॉर्म हैं। अब अगर आपने बैकवर्ड रीडिंग फॉरवर्ड रीडिंग के कंसेप्ट्स समझे हुए हैं, अप्लाई करना जानते हो, देन यू कैन इजीली नो द आंसर फॉर दिस। अब इट फॉर्म्ड, क्रिएटेड, डिजाइन, कमीशन, स्टूडेंट्स को लगता है ऑलमोस्ट ये सारे सेम हैं, बट आर दिस सेम? मे बी यस, मे बी नो। बट अगर आप फॉरवर्ड रीडिंग या बैकवर्ड रीडिंग से ध्यान दे तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? डिजाइन की। इट डिजाइंड बाय, ओके। एंड फॉरवर्ड रीडिंग से भी अगर आप ध्यान देखो, यहाँ पे आप बात कर रहे हो डिजाइन की। सो फ्रॉम बैकवर्ड रीडिंग एज वेल एज फॉरवर्ड रीडिंग, बिना सोचे समझे यू कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन विच इज इट इज डिजाइंड, क्योंकि क्वेश्चनियर ऊपर आपने बात किया है, डिजाइन हुआ है, सो इसीलिए यहां पे भी डिजाइंड ही आएगा। क्रिएटेड भी आ सकता है, बट अगेन क्योंकि बात आप डिजाइन की कर रहे हो, ऊपर आप रेफरेंस दे चुके हो, आगे भी आप रेफरेंस देख रहे हो, डिजाइन की बात हो रही है हर बार, सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी डिजाइंड, ओके। Now coming to the next blank, to help teachers and to something with very young। अब टू के साथ यहाँ पे हेल्प लगा हुआ है तो पैरेललिज्म का सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी बेस फॉर्म ही यूज होगी, बट यहाँ पे सारी ही बेस फॉर्म्स हैं। तो अब क्या करोगे? राइट नाउ वी आर गोइंग टू फिल बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट और मीनिंग। अब अगर आप इस लाइन को पढ़ो, इट इज डिजाइन टू हेल्प टीचर्स एंड अदर्स टू आस्क विद वेरी यंग चिल्ड्रन। आस्क विद होता है या आस्क फ्रॉम होता है? जनरली हम क्या यूज करते हैं फ्रेजल वर्ब्स में? आस्क फ्रॉम। आई एम आस्किंग दिस फ्रॉम यू, राइट। हम ये नहीं कहते आई एम आस्किंग विद यू। साथ में, विद का मतलब क्या होता है? दोज हु कैन अंडरस्टैंड रिटन हिंदी, इट मीन्स साथ में। So over here we are going to use our best friend which is process of elimination। तो ask हम eliminate कर रहे हैं। Others to think with, क्या वो young children के साथ सोच रहे हैं, उनके साथ सोच रहे हैं? young children के साथ think with आ सकता है? The answer is no। Now the next option which you have is learn। To learn with, क्या वो young children के साथ learn करेंगे teachers? The answer is no। So you are left with just one blank which is communicate, और वैसे भी ये contextually fill भी सही होगा, right? To communicate with young children on complex emotions। communicate कर रहे हो आप children के साथ, so that's why this makes contextual sense also, right? Let's move on to the next blank। Professor something at the University of Medical School, something the design involving children to give feedback। अब इस पर्सन ने, प्रोफेसर जो टैस्मिन फॉर्ड हैं, उन्होंने क्या किया डिजाइन के साथ? स्टॉक्ड। स्टॉक का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है स्टॉकिंग क्या होता है, जब आप किसी का पीछा करते हो, राइट। स्टॉक थोड़ी करेगा वो डिजाइन को। Again over here we are going to use our process of elimination which is based on the meanings। For that you need to learn the vocab। So vocab and grammar are very important to solve your reading and writing, filling the blanks। Stumped। Stumped का मतलब क्या होता है? Stumped का मतलब baffle, हैरान करना, राइट। वो हैरान करेगा डिजाइन को? The answer is no। Led। यस, डिजाइन को लीड किया जा सकता है। लॉस्ट द डिजाइन। क्या यहाँ पे हमने कहीं बात देखी है कि कहीं पे डिजाइन लॉस्ट होने की बात हो रही हो? द आंसर इज नो। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू एलिमिनेट lost also। So we are just left with one blank and that is contextually correct also। So it will be led the design, okay। वो उस प्रोफेसर ने डिजाइन को लीड किया। Now when we are something out research, एक चीज स्टूडेंट्स जो हमारे ऑनलाइन हैं उनको पता है, carry research is a collocation, right? carry out research, right? So this is a collocation first of all, but इसमें क्या आपको collocation की knowledge की जरूरत है? Maybe no, because same word ही use हो रहा है, जो verb की form है वो same word ही use हो रहा है in different verb forms like carrying, carried, carries और carry। अब अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं, इफ यू हैव अटेंडेड आवर ग्रामर कोर्स, यहाँ पे भी मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि इट के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। क्या आता है? साथ में एक ऑक्सिलरी वर्ब लगी होती तो वो आईएनजी फॉर्म आ सकती है। एंड यहाँ पे भी आपका आर लगा हुआ है विच इज मोर लाइक एन ऑक्सिलरी वर्ब। सो आपको पता है आर के साथ क्या आएगा? आईएनजी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली सिलेक्ट दिस ब्लैंक।
when we are carrying out research in school. Simple logic and you can solve this. So let's see if all the answers are correct or not. All the answers are correct. So all the strategies which we teach are based on context, lexical resource and grammar. Context में we do skimming, forward reading as well as backward reading, and we had seen the importance of forward as well as backward reading today. We could understand कि design answer क्यों आएगा blank में. It was based on forward as well as backward reading. And tone, positive है, negative है, neutral है. Many times we are going to solve our blanks on that basis. Now lexical resource में collocations की knowledge, phrasal verbs की knowledge, like ask के साथ आपका with नहीं use होता है, ask from. This is your phrasal verb knowledge. Vocabulary we had seen जहाँ पे stumped था, वहां पे stumped क्यों नहीं आएगा, and we had selected led. All this was based on vocabulary. And coming to grammar, we have a complete grammar course which is approximately of 30 lectures. In that, we teach you parts of speech, subject verb agreement, prepositions, models, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules, sentences. All this we teach, and we had seen the application of British English rules today, जहाँ पे आपको title uppercase में था, so you know that it was a title. So all these little things are going to help you to crack your reading, and always remember you have 2.5 to 3 minutes only to solve your reading blanks. So in first 30 to 60 seconds, you are going to skim the content, to know the tone, to understand the gist, as well as to know the tenses. And then in next 90 to 120 seconds you have to look for clues. Pointers hain so you can find out the pointers, or use process of elimination, which is your best friend forever. And all the strategies which we teach are validated and proven strategies. The proof is in the ticker below, as well as these recent success stories where students have scored 90, 82 in their first attempts. If they can score, you can also score. If you have any question, or if you want to take in-institute coaching or online coaching, you can WhatsApp us at 8699121121. And do not forget to subscribe to our channel, because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.